से आए हैं आज हमें इवेंट में सपोर्ट करने ज्वाइन करने इनका सेशन भी है पोस्ट लंच आगे है डॉक्टर साहब वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया and exhaustively practicing medical cannabis and hemp another leading practitioner in his region. Right, so we are starting. It's like Yes. great. So welcome all of you again. Thank you so much for this support, for this love. This is the second edition of India Hemp Expo 2023. Officially, we are starting. We have a ribbon cutting ceremony in the afternoon because the director Ayush of Maharashtra will be joining us, Dr. Reddy. So he will be joining us at around 2. So we'll be having the ribbon cutting ceremony from him. We requested several ministries and several ministers also to join. We were hopeful that inaugural will be doing with some minister today, but due to some last moment schedules, they are not able to visit. The government is working very exhaustively, by the way, 24/7 round the clock. I came to know, and when I met these ministers, so things have changed now. अब वो जमाना गया जब लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी अगर लग जाएगी तो आपकी ऐश है, आपकी आराम है. मैंने देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर वर्किंग टिल 11:30 12 इन द नाइट, एंड आई अप्रिशिएट एंड कांग्रेचुलेट. हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं उत्तराखंड से. Luckily, he's my junior as well. मैं स्टेज से इनको बोल सकता हूँ. He's from the same city. डॉक्टर साहब आप उधर आए ना प्लीज. Uttarakhand is one of the state where this particular segment and domain can grow at a very good level, at a very good pace, and the state like Uttarakhand can grow the entire ecosystem, can help the bottom line, the farmers, the agricultures, the manufacturing industry. Many aspects can be there. We'll be discussing that in next 2 days. So officially, I welcome you all in this expo. I want to keep this simple, straight. I don't want to. मैं कोई भाषण यहाँ नहीं देना चाहता हूँ. सबसे पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा शो कर भी पाएंगे, बट आप सबका सपोर्ट है. द लव यू पीपल आर गिविंग, द सपोर्ट यू आर गिविंग, इट्स ट्रेमेंडस. वी हैव जस्ट स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन एंड द फ्लो इज एक्साइटिंग टू माय टीम. बोल रहे थे सर आप तो बोल रहे थे इतने कम होंगे, ये तो अभी से इतने हो गए, किड्स खत्म होने वाले हैं. मैंने कहा डोंट वरी, वी विल अरेंज एवरीथिंग, बट ट्रेमेंडस रिस्पांस वी आर गेटिंग till now and hope for the best. So the next 2 days, the agenda I will brief quickly, and then I will introduce my panelists and will give the mic to each one of them. The flow is they will introduce themselves and maybe for 5 minutes or 10 minutes maximum they can speak, and then the forum is open for the questions. We have another session at round 2, so we have around 1.5 hours for this session, right? So the 2-day event is this first session. Then we have post lunch today, the doctor conference. There is one association of Ayurvedic practitioners, one of the leading association of private practitioners in Mumbai and around. They are the official supporting partners for that. So they are bringing certain well-known speakers, Dean of D.Y. Patil, HOD Professor of R.A. Poddar College, Worli. So they are Dr. Nilesh Doshi, the first Ayurvedic surgeon of, I think, Mumbai or Maharashtra. And he's a very experienced and learned professional. You will meet him in afternoon. So all of them are our speakers for that conference. It will go till 5. 5:30 onwards, we have a industry meet. All the industry owners, founders are required there. We have an industry discussion, CEO discussion, you can say. We have certain challenges. We'll be drafting the minutes and putting to several ministries. I don't know how many we have seen in the entry. We have placed all the letters and all the blessings we have received from so many ministries and VVIPs. In our stall also, if you go to the hall C, Indian Vadyas and Vadyas, we have only placed that. Why? We just want to convey that all these ministries and all these officials are very much interested. However, we need to educate them. We need to inform them. We need to ethically place ourselves first, and then gradually keep informing and updating them that how this particular domain can help. That is the need of the hour. That what I have realized when I went to all these ministries, departments. Many of them still not aware. Many of them are still maybe somehow pseudo negative. I will say pseudo negative. So that is the one thing which we need to understand and ensure that has been clarified to all of them. So that's why we are sitting together at 5:30. We all industry people will discuss our pain, our issues, our challenges. Be open, be frank in that session. And we have an award evening after that, which is known as India Hemp Awards. So we are felicitating and we are giving awards to certain companies.
and to certain professionals and doctors as well in that ceremony. Second day, tomorrow, we have the first session at 11 o'clock, which will be focusing on manufacturing, cultivation, legal, extraction, all those aspects of. It's a very interesting session. Please do not miss that as well. And speakers are awesome. Speakers are awesome. They have knowledge. They have, in fact, all our panelists today also. I will introduce each one of them. So this session, then doctor conference will be a bit technical, so the doctors can attend that. The non-doctors can move around to the expo. That's why we have kept that. Okay, all can spend time with the stalls, with the people, meet them, understand them, know the companies. You are coming here, you are giving your time. So at least visit each and every stall. By the way, just remember one thing. कई बार क्या होता है when we are going to a particular conference, we have a specific mind. Okay, I am a doctor. I will go to a medical company. But if you go to the other companies also, you will get to know the benefits of hemp. Like I went to one company who are producing paper. In fact, the kits you have received today, this is the hemp fiber. The diary you have received today are made from the hemp. The certificate you have received is from the hemp paper. So you will get to know all these things. You get to know about so many people who are doing purification. By the way, as a clinician, the purification is very important for your patients. And the non-medicals also sometimes they think okay medical मेरे लिए नहीं है ये तो डॉक्टर का है ये मेडिकल कैनबिस की कंपनी में मैं क्या जाके करूंगा I am not a doctor. But if you go to a medical cannabis company stall as well, you will get to know okay maybe in your family member you have somebody who is having these issues and medical cannabis can heal them very well. This is the best healer, best you can say right now solution for pain management, for insomnia, for psychiatric disorders, for so many other issues, for digestive disorders, for your chronic infection in skin. So many. If I start going on because I am a clinician, hardcore clinician, and practicing, and that's why I'm excited. That is my reason of doing these events, so that this industry will be positioned and the patients ultimately are getting benefited. That is tremendous. I can't explain in my words when a patient literally crying with the last terminally ill stage of cancer and nothing is working. The highest level of painkillers are not working, ma'am. And we have seen, in fact, in India, we have still a very less amount of THC in the products, but still the quality, the healing, the way they are after that behaving. Many of them are touching your feet, and many of them were literally crying. And from the first dose, the pain is gone. The pain is healed. So that is the power of this particular plant which I'm talking about. And if it is doing that, I want to dedicate my life to this plant because as a clinician, I want my patients not to suffer from pain if I can heal them at some point of time. So that is one, I think, reason that we should focus on this segment. And there are so many other benefits as well. There are so many other benefits we will listen to from our esteemed panelists. And the second session tomorrow is on wellness, on nutrition, on cosmetic. There are some allopathic practitioners also. We want all the pathies to come together. See, we have an internal fight. I am an Ayurveda doctor. I had a platform where 3.5 lakh Ayurveda doctors are there. We want to protect our rights as well. I will talk on that as well in this session or maybe in the next one. But on the same note, we want all the pathy doctors to come together. Let's give the patient should get the holistic approach. There has to be respect for each and every pathy doctor. Allopathies should respect the Ayurveda and vice versa. That is fine, and we can create some kind of an ecosystem. In way, like I am creating already, I have done so many cases where ophthalmologists are referring. डॉक्टर साहब हमने सब कुछ दे दिया क्या आपके पास मेडिकल कैनबिस में ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो इसको पेन में रिलीफ दे या वी just see 2 to 3 months कुछ ऐसा हो सकता है कि जितना भी है quality of life improve हो या some we can't claim anything that we are curing but yes the leaf and bud raw material has the potential of healing as well and we have seen around the world. I don't know how many of you have seen Beat the People documentary on Netflix. If you see that documentary on Netflix, I repeat, Beat the People. The small kids, 6 7 year old kids, they were suffering and literally the doctors have declared that they have just few months. And with the cannabis, the doctor is shocked. Where cancer gone? It is not in the reports. In first time of life, I am. These are the real-time cases, real-time experiences you can see in that documentary. And due to that, the allopathic doctors have quit their traditional allopathic practice and they are doing medical cannabis practice in US. So many cases you can see. So we all know that why it is not then in the leading front. That is a separate discussion. And Dr. Asha is from straight away from US. In fact, she can tell you more about this aspect which I was discussing about the documentary. And thank you so much, Dr. Asha, especially traveling from US for this particular event. They got to know very late about this. In fact, let me just quickly explain. So this is the agenda. Okay. So second day, and then after that we'll conclude.
So I request all of you to attend these sessions also along with the expo. I request all of you, and we are streaming live. I think it is on YouTube also. So if you are not able to sit here, you can attend from anywhere, by the way, right? So Indian Methods, just type, follow our YouTube channel. At least it will be live on YouTube. We try to make it live on different other streams as well, but I think YouTube is the best. So you can see there, and it will be available after the session also. So if you're not having any time, you have very important meeting, maybe in today evening or tomorrow, you can see that afterwards as well. Right. So on that note, I request each one of the panelists, because we have an angle now. So better you should come here for 5 minutes, each one of you, talk about yourself, about your company, and I will start with two guests, and then I will come and let me just explain why these people are sitting here. We have, by the way, extremely thankful and extremely encouraging that we have so many sponsors, so many exhibitors. So we have other associate sponsors as well. It's a pure B2B event, don't mind. We have to take care of the cost as well. So we have an associate sponsor stall where we privilege and we support those who are supporting us. We are also supporting them. So that's why all these are again a huge round of applause, by the way, first of all. Because without you, without all of you, this would not be possible. For me, it is not a profit-making affair. For me, it's just we need to meet the expenses because we need to get it forward. I have not taken a single salary or a penny out of this entire project. This is the second edition, and this is my commitment. So my commitment is just to grow this industry. पैसा तो byproduct में आ जाएगा. I have that knowledge, so I can do that consultancy and advisory with each one of you. You all are my potential clients. मेरे को भी तो थोड़ा market करना है ना अपने को. Anyways, so that is separate. But this event, this entity is non-profitable just to meet the expenses. And without you, boss, नहीं happen हो सकता. So thank you so much, all of you. Avasti ji, straight away from Uttarakhand. Dr. Saab, thank you so much, all of you being here. So अतिथि देवो भव के थ्योरी को चलते हुए, I first of all welcome Dr. Asha Oraskar. She is the Chief Executive Officer of Orochem Technologies, a biotech company based in Naperville, Illinois. Orochem has now become a world-renowned company in the field of chromatography, proteomics, genomics in the past 25 years. A scientist by training, an innovator by experience, and a businesswoman by nature, Asha brings together all the quality needed to bring innovative products to market rapidly and make them successful. Asha is on the board of directors for Charisma LLC. So we again welcome you, Dr. Asha. Thank you so much for joining us. Let's have your blessings and direction for this session today. Thank you. Thank you all for inviting us, actually. That here we are, the Ayurveda community that's actually prescribing medication. And we'd like to hear how we can actually benefit from the practices of companies such as ours that provide CBD in its purest form and be able to bring that to each and every one of the communities that are suffering, from diseases and practices that they would like to get alleviation for. So Anil and I started Orochem Technologies 26 years ago, and we are really a technology-based company. And what we really provide is, purification processes. And it was about the time when we are hearing about the different communities and children who are really benefiting, from medications for epilepsy, is when we find out that the drug that's really coming out from such practices is coming from a natural product. Okay, and cannabis sativa, the plant that actually has been secured such that you can really design it to have CBD in its highest form and those which can have THC in its highest form. In the United States, we call this industrial hemp. So we really went ahead and sourced products, from industrial hemp as feedstock and developed a complete process where through our technology of purification, this continuous purification that we do by chromatography, you're able to actually purify THC from CBD. And
What this does is that you are now in a position to be able to access cannabinoids, CBD per se, in its purest form at greater than 85% purity. The technology has been so successful. The product that we produce has been tested by any lab that you can look at in third party and has been patented about 3 years ago, such that we have a generic pharma like Perrigo out of Michigan investing $50 million in Casmira. So today, what we are able to do is provide CBD in its purest form at ton scale quantities if we like. And we are truly delighted that the opportunity exists with all of you, that we can actually bring this to companies and formulators that can establish, formulations and other product lines to be able to administer to children where you don't want to give them THC contaminated CBD, and to others such that you can provide CBD in its purest form that you like. We have also, Casmira has also gone ahead and done clinical studies. Phase 1 toxicity studies have been done, and we have demonstrated that the toxicity really exists in products that are produced from isolates and not the oil that we produce, and the brand is Imperial Oil. So I really welcome questions, and details and know-how that all of you are looking at to be able to understand how we can provide this to you. We are here to be able to establish further understanding of how the oil is going to be useful to the population at large, with all of you experts of the Indian Vaidya community that has knowledge of it for centuries. I'm honored and really delighted that we can be of help. Thank you. Thank you, Dr. Asha. In fact, we have a video message also by Priyanka. She is unfortunately, she was not able to travel with Dr. Asha. So tomorrow we'll be playing that for all of you as well. And again, thanks to Dr. Asha for her time, for her overall dedication and focus. In fact, I remember when I had a call with her and her team and Dr. Asha and Priyanka and all. I think around 10 days, I think it was just 10 days back, more than a week now. So they were very much excited and very much serious. I thought, actually, we got several calls and queries from Thailand, Australia, Africa, US, Canada. I think this time we got around more than 20, 25 queries right now, international queries, as an exhibitor or sponsor. And I was very surprised and excited and thought like, ये hall छोटा पड़ने वाला है. But somehow many of them were still confused, or maybe afraid, or maybe not aware about Indian ecosystem, or maybe they are not able to uh, still decide what they want to do. See, any international organization or any company which I have discussed with you, and just for your kind information, maybe all of you are associated with an international group, they want to come to India. On one side, some people are confused that this government is pro make in India, or they like focus on exports and that aspect, which is fine, which is good. And as an Indian, we should proud of that. However, on the same note, all the international brands are still coming in many sectors and domains, and they are growing and they are taking it forward. There are two, three aspects which we need to understand. It's very simple. If you are bringing something on first hand, like for example, we had an Invest UP summit a few days back. Prior to that, we did an Invest Ayush UP summit with the government of Uttar Pradesh, and we were fortunate even means our organization that we have given like they have given us this responsibility to help them and to manage that entire UP Invest Ayush UP summit. In fact, the logo you have seen has been designed by our designer of that event, that I proudly can say. So in that event, we came to know that the government is looking forward for international brands if they are bringing some kind of investments to the state. That is point number one. Second, in this particular domain, if you are going, you have to set up your R&D facility either, or you can collaborate with any existing R&D center to take it forward for your products on Indian population, be it medicine, be it nutrition, be it whatever. In fact, for fiber also, for fabric also, you have to do some local trials, and local combination should be there, and R&D should be there, because the person sitting in US and the person sitting in India is different.
and that is somehow that is a legal requirement as well. If you want to launch a medical range, there is a legal requirement that you have to do a local clinical trial on the Indian population, and then they will give you the permission for that particular medicine. So that route is always open. That route is there for all the international companies, be it hemp, be it cannabis, any form. Government is not saying that no, but they need to first of all understand. They need to first of all ensure that whatever they are bringing will make sense to them, will make sense to their society. They are not in the mood. And by the way, a disclaimer: we never promote any recreational use of this particular herb, sensitive herb, which is hemp. People get confused. We got challenges in terms of getting ministers here. We got challenges in terms of media. We got cancellations from several media last time and this time also due to this word, this leaf, this logo. In fact, एक जगह बिलबोर्ड का इशू आया तो वहां को बोला डॉक्टर साहब ये लोगो हटा दीजिए। मैंने कहा ये तो इवेंट का नाम है बॉस, इसी को हटा देंगे तो इवेंट कैसे करेंगे? So we have all these challenges. All of you have these challenges, but we are trying to overcome that and we are trying to diffuse that. On that note, I again request all of you to please be open. हमने request करा है next session 2 बजे से, तो जो भी उसके VIP से organizers आ रहे हैं, I have requested them to be in our organizer room. इसको अभी floor रखेंगे till 2 o'clock, right? So you have to be interactive and you have to ask questions. First of all, I will request each panelist को यहाँ पर अपने introduction जैसे डॉक्टर आशा ने किया करेंगे. डॉक्टर पवन आप प्लीज आगे आए. Thank you. He's a very senior, rather doctor and a very learned professional. Dr. Pawan, welcome you, please. सर का रिकॉर्ड है by the way, highest number of webinars in Ayurveda, सर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. Give a huge round of applause. So on that note, I would request now our next guest today. हमने पहले international guest को welcome किया, and I met secretary of Ayush Uttarakhand and a very positive person. I would like to appreciate him. He is very much proactive about this plant and he wants that entire industry should come to his state. Then he connected us to the directorate office and Dr. K.K. Pandey from the Ayush directorate is representing Uttarakhand today here officially. He will be meeting all of you. He will be drafting a official report to submit to the officials, and they are very soon planning some event with us in Uttarakhand as well to take all of you to that state, how you can get involved with the government, with the private sectors, what you can do in that particular state in terms of hemp is concerned. So very soon that will be happening. So I would like to welcome Dr. K.K. Pandey and please give us some few thoughts and words from your end. Thank you. थैंक्स अ लॉट सर. तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और डॉक्टर पीयूष को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट को आमंत्रित किया आज महाराष्ट्र में और हमें अपने व्यूज रखने का मौका दिया और इस इवेंट को कि हेम्प इंडस्ट्री के कितने सारे लोग हैं उनसे जुड़ने का मौका दिया. मैं भी अवेयर नहीं था कि इतने सारे लोग हेम्प इंडस्ट्री में अब आ चुके हैं. अभी पहले तो आज आई थिंक 4-5 साल पहले शायद 1 या 2 लोग हेम्प बेस्ड इंडस्ट्री में थे और वो काम करते थे, बट अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है. तो जैसा कि सर ने भी आपको बताया भी कि पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. मतलब पहले सर जैसे बोल रहे थे कि गवर्नमेंट में पहले लगता था सरकारी नौकरी है, दैट्स इट, हो गया, अब नौकरी लग गई, काम वाम होता नहीं है. बट पूरा सिनेरियो पिछले 4-5 साल में चेंज हुआ है. आई थिंक 10-11 बजे तक आई थिंक कई सारे लोग गवर्नमेंट से हैं तो देख रहे होंगे कि आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे काम होता था वैसे अब गवर्नमेंट सेक्टर में काम हो रहा है. और बेसिकली आयुष के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है. मतलब वो इतना काम जितना आपने शायद पिछले 20-30 सालों में नहीं देखा होगा, उसने पिछले 4 या 5 सालों में उतना काम हुआ है आयुष गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आयुष के लिए किया है. और उसी हिसाब से फंडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट भी मिल रहा है. तो ये चीजें चेंज हो रही है क्योंकि आप सब लोग इस सब में प्रतिभा कर रहे हैं, आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन अच्छा जा रहा है आगे, इसलिए ये सब चीजें हो रही है. उत्तराखंड के लिए मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि हम लोग भी आयुष को प्रमोट करने के लिए बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं. जैसे डॉक्टर पीयूष मिले भी थे अभी सेक्रेटरी सर से, हमारा सौभाग्य भी कि हमारे सेक्रेटरी जो है वो खुद एक डॉक्टर है. तो एक सेक्रेटरी जब डिपार्टमेंट को इनफैक्ट ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, तो एमबीबीएस डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत ही एक्टिवली हमारे स्टेट में आयुष को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं. इनफैक्ट हमारे चीफ सेक्रेटरी ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर और वो भी आयुष के लिए इतने ज्यादा डेडिकेटेड है कि इनफैक्ट वो तो ये बोलते हैं कि आप एलोपैथी छोड़ो, आयुष को आप प्रमोट करो हर जगह. तो हम लोग उस आयुष के लिए बहुत सारी पॉलिसीज में भी चेंज करने जा रहे हैं. आयुष के लिए नई पॉलिसीज आ रही है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए. हमारा स्टेट जैसे उत्तराखंड के बारे में आपको पता भी होगा कि सीनिकली कितना मतलब रिच है, इतनी अच्छी लोकेशन है. हम लोग
वेलनेस पॉलिसी लेके आ रहे हैं जल्दी, जिसमें हम लोग इन्वेस्टर्स को लाने के लिए स्टेट में बाहर के से बहुत सारी लिक्विडिटी पॉलिसीज आ रही हैं, इनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि आप लोग आइए यहाँ वेलनेस सेंटर खोलिए, पंचकर्मा और भी जो योगा नेचुरोपैथी सबको प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज आ रही है। इसके अलावा सर ये इंडस्ट्री की जैसे हमने बात की, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लीगलाइज, कुछ इशू ऐसे हैं जिनमें हम फंसते हैं और हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई थिंक हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन जरूर करना चाहिए। प्लीज आप सब लोग जुड़े हैं, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, तो गवर्नमेंट के पास, जिस भी आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो सभी लोग अगर मिलकर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इशू है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के पास बहुत ज्यादा, आप लोग डॉक्टर्स हैं या इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको मालूम है कि इसके बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं, बट एक जनरल पब्लिक के पास या शायद कहें पॉलिसी मेकर्स के पास ये परसेप्शन नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये तो रिक्रिएशनल ड्रग है, उसके लिए यूज होती थी, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसा परसेप्शन जाता है। बट अगर आप लोग इसका बेनिफिट आगे रखेंगे और अलग अलग लोग जाके मिलेंगे कि हमें इसकी जरूरत है, तो डेफिनेटली आई थिंक ये सब चीजें लीगलाइज हो जाएंगी, चैनलाइज हो जाएंगी जल्दी। उत्तराखंड में तो अभी लाइसेंसिंग सिस्टम भी हम शुरू करेंगे, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि हर आयुर्वेदिक ड्रग जो भी सेल करे तो वो लाइसेंस के थ्रू ही सेल करे और सारा डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा कि लोग जो है सेल नहीं कर पाते हैं, डरते हैं रखने में शॉप्स में, तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। और आई थिंक जो फुल स्पेक्ट्रम जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनकी परमिशन तो मिल जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट परस्यू करेगी और इसमें कुछ ना कुछ आउटकम जरूर देगी। तो आप सभी लोगों को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा जो भी आयुष रिलेटेड इंडस्ट्रीज में इस सेक्टर में आना चाहते हैं, आयुष में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं, कुछ अपना रिजॉर्ट आयुष रिलेटेड बनाना चाहते हैं, कोई फार्मेसी लगाना चाहते हैं, उत्तराखंड आइए, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। आप लोग को जितना एक प्राइवेट सेक्टर में जितना सपोर्ट मिलता है उससे ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर से मिलेगा, तो आप जरूर आप आइए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें बुलाया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पांडे। एंड लकीली ये बात मेरे को बोलते हुए यहाँ प्राउड हो रहा है। मेरे को जैसे सुबह मिले तो आई गॉट एडमिशन इन 2002। मैंने गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो हिंदुस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, इनफैक्ट हमारी एलुमनाई अभी 100 साल शताब्दी वर्ष उसका हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इन अप्रैल, सो इट इज अराउंड 100 years old now. So I got that honor and privilege to learn Ayurveda in that esteemed institute. So I took admission in 2002 and Dr. Pandey is from 2004, right? So 2 years juniors है मेरे। And Rishikul is another college in Haridwar. There are 2 Ayurveda colleges. अभी दोनों campus हो गए हैं। So he's from there. So मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि एक हमारे junior इस level पर आज government के साथ काम कर रहे हैं। He is permanently commissioned into the government and doing so many activities. मेरे को एक बात और अच्छी लगी, if you notice they have this like we carry our brand in some way, so they are carrying the brand of Uttarakhand with him in a form of this इनके अगर आप शर्ट पे देखेंगे तो there is a logo, and this mindset is very important because when we work with government and if you have this mindset that the marketing and the placement of their state, they are very serious about that. I noticed these small things, so this is the seriousness. And when in fact I met so many officials in so many states. There are few active states: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Uttarakhand is not that active, but these states are active in terms of manufacturing. So I personally met them in 2 states. I personally requested them, but there are so many things in first of all they are big states, so there are so many things there as well. Anyways, but this particular state and the secretary and the entire team is so specifically focused on growing, and immediately they took that decision and immediately they gave us the logo support and they have sent. So this is the seriousness of a particular state which we need to understand. So my request to all of you is let's take it forward. I will definitely bring along all the companies who are associated with us, Dr. Pandey, and thank you so much again for joining us today. He will be here till evening. I think your flight is at night, so he'll be there till evening 5:30 or 6. So you can interact with him, meet him. He has the colleague Dr. Hemant as well. Where is he by the way? अरे आप इतना पीछे क्यों बैठे हैं सर, आगे आइए ना प्लीज. So Dr. Hemant is accompanying Dr. Pandey today. Thank you, Dr. Hemant. So now moving to another speaker. So now when we talk about this event, and I again appreciate, हमारे पास उत्तराखंड से अभी अवस्थी जी भी हैं, उनको मैं 1 या 2 स्पीकर्स के बाद लूंगा, क्योंकि सर फिर हो जाएगा ना कि एक स्टेट को थोड़ा सा राजधानी की तरफ जाते हैं, फिर बाकी भी जाएंगे. नहीं ठीक है, फिर इन्होंने बोलना शुरू करा तो फिर मैं तो इनको हिम्मत नहीं है चुप कराने की, और आपका मन नहीं करेगा इनको छोड़ने का, लेकिन टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सबको करके फिर आपको बता देंगे इतना बचा है, उसमें आप जो मर्जी अपनी. इनको आप इतने इंटरेस्टिंग स्पीकर है, मैं इनसे लास्ट टाइम जब मिला था, एंड इतनी ग्राउंड रियलिटी से आपको वाकिफ कराएंगे.
मतलब mesmerizing है. मैं तो डर रहा हूँ मेरा टाइम होने वाला है 1 घंटा, तो हम क्विकली करेंगे रैप अप. एनीवेज, सो नाउ लेट मी जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. और ये मैं अगेन थोड़ी-थोड़ी अपनी मार्केटिंग भी बीच में करता रहता हूँ, मेरे को यही आता है. So when we thought about this idea, so there were few companies in the first edition and in the second edition. जैसे अगर आपने एंट्री करा, I don't know how much of you have noticed, we have already launched the third edition, which will be in December 2023 in Bengaluru. So हमने दिल्ली में start किया. This is the second one in the business capital of our country. Yesterday I posted something that when you have a billboard in Mumbai, I love Mumbai by the way. Mumbai, a round of applause for Mumbai. This city is tremendous. अगर मेरे पास थोड़ा सा और पैसा होता तो मुंबई में ही सेटल हो जाता. बट यहाँ पर सेटल होने के लिए सोचना पड़ता है. देयर आर टू मेनी लाइक एक्सपेंसेस. वो तो छोड़ दो, प्रॉपर्टी तो खैर भूल ही जाओ इफ यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई. एनीवेज, so if you can consider yourself as a brand. If you have a billboard in Mumbai and if you have published your ad in Bombay Times, so अगर आपका ad Bombay Times में आ जाता है and your billboard is in any of the locations, especially in the South Mumbai, and we have 3 for this event, and we have been advertising Times of India, Bombay Times twice. And special thanks for Sukrit. Sukrit hai? I think he is on stall. Special thanks to him for locally supporting us in this. So on that note, I welcome Mr. Vikram Veer Singh, because when we thought about this first edition and the second edition, they were the first company to book their slot. So हमने उसी ऑर्डर में पैनलिस्ट बनाए हैं. जो हमारा इनॉग्रल है, फिर हमारा सेकंड सेशन है, थर्ड सेशन है. वहां पे टेक्निकल भी है, ऐसा नहीं है. बट आप सबके लिए ऑफर है बेंगलुरु एडिशन के लिए. यू वांट टू विन द इनॉग्रल, एंड डेफिनेटली इस टाइम तो मैं पीछे पड़ के जबरदस्ती किसी ना किसी मिनिस्टर को तो लेके आने वाला हूँ. अब जिद करनी पड़ेगी ना, बच्चा कई बार जिद करता है. वो जिद अभी तक हमने करी नहीं थी, बट अभी 2 एडिशन कर लिए तो थर्ड एडिशन में तो कोई आएगा. अभी लोगो सपोर्ट मिला है, एमएसएमई का लोगो सपोर्ट भी गॉट, गुजरात टूरिज्म का लोगो सपोर्ट भी गॉट, उत्तराखंड गवर्नमेंट का लोगो सपोर्ट भी गॉट. So maybe more, and we have around 10, more than 10 in fact, letters, blessing letters from VVIPs you can see at the entry and the stall level. So we will definitely have some very important person in the arrival. So आपके लिए discount offer open है for Bangalore. You can book today or tomorrow. On that note, again ये दोनों बार फर्स्ट आए हैं अभी तक. So आपको अगर फर्स्ट आना है थर्ड टाइम भी तो बॉस आपसे बात कर सकते हैं. On that note, Mr. Vikram Veer Singh. When I met Vikram and Abhinav आ गया भी नहीं. They both are like मैंने वहां से देखा जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था. मतलब जिस दिन इनके माइंड में थॉट था कि हमें इस पे काम करना है, वहां से कनेक्टेड हम एक क्लब में मिले तो इन्होंने बोला डॉक्टर साहब हमारे को थॉट है. वो थॉट प्रोसेस से एक पूरी केस स्टडी है इनकी भी, बाय द वे एक केस स्टडी बना सकते हैं उनकी थॉट प्रोसेस से. वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ हेम्प एंड मेडिकल कैनबिस इन आवर कंट्री, Ananta Hempworks, and the co-founder Vikram Veer Singh is with us today. He is the founder and CMO of Ananta Hempworks. Ananta Hempworks is a holistic hemp-based brand focused on medicine, cosmetics, nutritional products. With the aim to develop the biggest Ayurveda community in India, Ananta offers well-researched and diverse products in the hemp category. Yeah, मैं एक बार जरूर बोलना चाहूँगा, and then I will give the mic to Vikram. See, medical cannabis specifically एक ऐसा segment है where you need to first of all respect the very important stakeholder, that is a doctor. आप ये समझिए. एंड इसका एक लॉ है जो डॉक्टर पांडे ने भी अभी बात बोली. लॉ है, शेड्यूल E1 है, जिसमें साफ सब स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दिस पर्टिकुलर मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. एंड दैट डजंट मीन दैट यू आर सेलिंग डायरेक्टली टू द कम्युनिटी एंड जस्ट यूजिंग दैट टूल एज ए प्रिस्क्रिप्शन. वो आपको एक टूल की तरह आप उसको यूज कर रहे हैं. इस अप्रोच से चलेंगे तो बहुत सस्टेनेबल बिजनेस नहीं कर पाएंगे. Nobody is selling alprazolam on social media. They are just opening up the alprazolam and popping up alprazolam and saying that I can get a good sleep. Wow. Nobody is opening or injecting opioid analgesics on open social media and saying that, oh, immediate relief in the pain. Then why are you opening the bottle of tincture and gulping in social media and saying that it is best for sleep, best for pain? With due respect, मैं थोड़े बहुत कटाक्ष तो करूंगा सर, बुरा मत मानना कोई भी. एंड ये इंडस्ट्री के लिए लर्निंग है. ये इंडस्ट्री के लिए लर्निंग है कि एटलीस्ट इंटरनल मेडिकल कैनबिस प्रोडक्ट्स को यू हैव टू मार्केट और यू हैव टू पोजीशन थ्रू द डॉक्टर नेटवर्क एथिकली एंड लीगली. नोबडी इज डूइंग इन एनी अदर पैथी. एंड शेड्यूल E1 पे स्पेसिफिक गवर्नमेंट का 2 बार नोटिंग्स आ गया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी प्रोसिक्यूशन. और सो आई एम नॉट थ्रेटनिंग एनी वन ऑफ यू.
I am with you. I want to all of you to grow. तभी तो मेरा show grow करेगा. But this is clear indication from several officials. Stop this thing. Otherwise, we have to cancel the license of those companies who are doing unethical marketing in the name of medical cannabis. Period. That you need to decide. Your associations need to decide from the industry what are the ethical protocols, what are the non-ethical protocols. But that has to be decided now. Dr. Shruti is coming today, one of the leading allopathic doctors. She has also written on LinkedIn publicly that please stop this self-medication thing or the self-marketing thing of medical cannabis. So on that note, because Ananta always stood on that mindset, I respect them and I congratulate and appreciate them. They never went to that mode, and they are having one of the largest network of doctors also in India right now, along with some other companies. So again, we welcome Mr. Vikram Singh on that note on our stage, and thank you so much again, Vikram and Abhinav, for supporting us in all our initiatives. All yours. Thank you, Dr. Piyush. Thank you for the panelists and thank you everybody who's present over here. I think Dr. साहब जितना हमने आपको support करा उससे ज़्यादा आपने हमें support करा है. And as Dr. साहब mentioned, we are working with the medical cannabis segment, in which our main focus is towards the doctor community. With the starting of the company, we realized that अगर इस plant की industry को legal तरीके से इस country के अंदर आगे बढ़ाना है, आयुर्वेदा सेगमेंट के अंदर रहना है, तो हम डॉक्टर कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, which actually delayed our company's plan of going onto the floor with the medicines by almost a year. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जब उनसे मिले थे, वो थॉट प्रोसेस को लीगल ओपिनियन में टर्न करते हुए और R&D को तरीके से समझ के कि हम कैसे मार्केट में उतार सकते हैं, इसी में हमारे को काफी टाइम लग गया. बट उसके बाद जो हमारे को क्लैरिटीज आई इस इंडस्ट्री के बारे में और हमने जब अपनी मेडिसिन वगैरह लॉन्च करी, तो हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि डॉक्टर कम्युनिटी के थ्रू इसके अलावा कहीं पे काम हो नहीं सकता. एंड जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन करा, लाइक द अदर केमिकल्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स और स्लीप और पेन मैनेजमेंट, like they are not allowed to be used without a doctor's prescription. Similarly, scheduled even drug and medical cannabis should not be used, and that is our main focus is towards the doctors. हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी पे ही फोकस करा है. We are available in a lot of clinic partners and we try to make sure, and we are almost there, we're making sure the medicines are only given out to the doctor community. With that, we are also focusing on our cosmetic line. We have a nutritional line. We also have launched a pet care line, which is actually OTC products, and that is where we are building the community and bringing out the awareness of hemp in the common people and all age brackets actually. And that is where I think 5 years down the line, आज से 5 साल के बाद जब हम बैठे होंगे, जो कम्युनिटी जिनको मेडिसिन की जरूरत नहीं, उनको हेम्प कम्युनिटी के बारे में जो अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, वो हम अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड कर पाते हैं. Rest, we are available. We are here on stall number 14. We would love to interact with you. Any questions, any other things which we are there, we would love to see you at the stall. Any other questions, we will definitely answer you at the stall. Thank you, Dr. Piyush. Thank you so much for inviting us over. Be part of the we are not going anywhere. Thank you, Vikram, and definitely we will be already booking one slot for you as a state sponsor. So and by the way, when we thought about this show and moving forward, let me just quickly explain you. Every year there will be one show only. Any good B2B exhibition should be once in a year at a nice location, and definitely it will grow. Next time I will promise I will have double conference area. मेरे को आज बड़ा दुख लग रहा है क्योंकि last time क्या हुआ था, we have a bigger conference area in Leela, but somehow 50% seats were not people were not there and they were maybe in the expo and उतना strength हम gather नहीं कर पाए. I think this year the strength is bigger and the audience are growing for these kind of shows. Deliberately I have put it a ticket to, in this edition as well. So we need to meet our expenses also. This is not a big industry. The entire setup is expensive if you are doing in South Mumbai. So anyway, so point is ki we will grow from here, and but what exactly the industry is you have to know. So आप खाली एक साल में एक बार शो में आएंगे, no. So we are launching the magazine also. India's first exclusive magazine on hemp industry, India Hemp Mag. That will be launched very soon. All of you can either subscribe or advertise in that as well. In the entry, there is a QR code. When you go to the entry registration desk, on the left side, all the panels are there for our brands. So there is a QR code. You can scan the India Hemp Mag creative, and you can the concerned person. She is heading this entire magazine.
and she can give you all the details if you are interested in subscribing or you are interested in advertising to that magazine, because we have one of the highest database from last 2 editions. Now we can proudly say that we have one of the highest database of all the professionals in India who are interested in this particular category, which is health. मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा पानी सारे गेस्ट को सर्कुलेट कर दे, जितने प्लीज पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनको भी पानी सर्कुलेट करें. सुप्रीत प्लीज, मैंने आपको थैंक्स किया था फॉर बिलबोर्ड एंड न्यूज़पेपर एड्स. ही इज द पर्सन supporting us in those activities and a very dynamic young entrepreneur and a very good person by heart. Thank you so much. So moving to the next panelist, and again in the order कि जब हमने booking start किया, and they were always there with us, and they are our registration test sponsor Niagara. I request Mr. Vipul Gupta, the co-founder of Hemp Cannabis startup by the name of Niagara. And again, both of them, Rajat and Vipul, they both are brothers and promoting their respective brands. They are also having the same mindset. Their thinking is they have to go to the doctor network, the channel. Ethically, they are supporting the entire fraternity and community, and very proactive. Always there, somehow some delays were there due to some issues, but now they have sorted it out as well. And full blow, they are coming with all their range. They are there in the Hall B, so you can visit their stall. Beautiful stall, by the way. You can understand about their range, and they are diversifying into other range as well this year. And I am proudly connected to them as an advisor. I am an advisor, by the way, to Ananta as well. Very marketing so Vipul, over to you, and thank you again for supporting. Hopefully in the 3rd edition also we'll be seeing you as a sponsor. Thank you. Thank you, Dr. Piyush and IHE for inviting us and giving us this platform to bring all the stakeholders of hemp and medical cannabis industry together. And I just want to learn, how do you manage everything, so many things together? I want some techniques from you after the event. My name is Vipul. I'm one of the co-founders at Niagara, and we are doing hemp and medical cannabis brand in India at the moment. We started in 2020 with a nutrition range, and in 2021 we launched our medical cannabis range. And we got inspiration when we went to US in 2017. We saw how it was improving the lives of people there, medically and nutritionally aspect. So, and we came back, we realized that Ayurveda already has a lot of formulations. There are more than 100 formulations in Ayurveda. So we, from that day onwards, we took a pledge that we would try to like spread this in all parts of India through our products and medicines. So in medical cannabis, we have classical as well. The quality. So whatever products you see, they are one of the highest qualities, and we have also special focus on standardization. So quality, standardization, and at the same time eco-friendly packaging. So we are keeping everything in mind, and we have been a trendsetter in sort of way from the beginning on all these aspects. My father, I would just like to mention that he has always taught us that do not misguide the patients. So whatever products or medicines we have, so our special focus has been on the effectiveness along with the quality. See, he always tells us it should be effective for the patients. So they're spending some money on the medicines, so it should be effective and it should help them. So with that in mind, with keeping that in mind as our motto, so we are going forward, and we look forward all to meeting you all at our stall in hall number B. And thank you, Dr. Piyush, once again for inviting us and letting us be a part of this event. Looking forward to meeting you all. Thank you. Thanks, Vipul, and thank you again, Rajat and Vipul. Both of you are doing very well. Hope for the best. On next panelist, when I met this person, in fact, हम अतिथि देवो भव की वैसे चलते हैं, तो इनको मिलाने वाले कोई और हैं, उनको हम इनके बाद बुलाएंगे, तो मैं तब उनका नाम लूंगा. जिनको मैं बुला रहा हूँ वो है गगन गोयल, founder and CEO of Twee and Mokes Expect Miracles.
Gagan Goyal is a tea taster, consciousness, understands anatomy of plant and botanicals. And ये आपने अगर word का ध्यान दियो, most expect miracles. When I first met him and he offered me, he has a beautiful collection of exotic teas. If you want to try those teas, this is not a typical green tea, by the way. So there are so many herbs, so many botanicals, so many flowers, so many things you can enjoy as a tea, and it is so refreshing, so relaxing, and he's an excellent guy. He's a very uh, I coin this term and I give to some people in my life, and I want to give you today, Gagan. So he's a person with a golden heart. The heart within him is so pure, and that I can feel and see when I am interacting with him, and it is so transparent. So this is the best part of a person. So when I met him and I like offered me his collection, I think we met twice, and both times I had a different one. Excellent, excellent, and you should try at the stall today. And thank you again for supporting us on this event. Looking forward to have you in all the editions in future. So over to you, Gagan, please. Hello everyone. I am Gagan Goyal. So you've got a very short, nice, mesmerizing introduction about me. So my background comes from a typical traditional Oriental businessman who. So there is a quote by Alfred North Whitehead. He was a great philosopher. If any one of you have read about him, he had this book called Process and Reality. That it takes a very unusual mind to identify the obvious. And that is what Dr. Piyush Chuneja does very well. So we have all the things which we are so, we don't really see what is so obvious in many things. And I think that is where I had my research, which we had done for this particular category, while we were already aware of the teas which are available all over. And it's in the hands of the Vaidyas how they combine different compounds and substances so that they can make that available to different humans. Are also not the same. All of us you sitting here are different people. We all have different memories, different traumas, different ways of healing yourself, different thought process, every moment changing. It's nothing is stable. It's very dynamic. So from that, we introduce certain infused and understand that something is obvious. We just have it and we feel kuch bhi nahi, weight loss bhi nahi. Our skin never got better. So from that note, we started developing very good infusions. We started to get into botanicals. And like a chemist, like a chemical person, we moved on to hemp and cannabis. So one of our companies, more Expect Miracles, is into food category, and We Expect Miracles is mostly into medical cannabis. And why we call it Expect Miracles is we have even stopped expecting miracles. So it is everyone wants moksha nowadays. Everyone is going to Sadhgurus and Ramkumaris. I see a lot of laughing faces here. So obviously everyone wants moksha, but no one expects a miracle out of that moksha. So similarly, Tui was a brand which is more of a visual language. We coined the word, which basically means that a smile, which naturally comes because you feel something has healed you, apparently. So all the formulations have been thought processed by that motto, and most of the formulations have been crafted towards healing most of the diseases, which are like Parkinson's or Alzheimer's, epilepsy, autism, as well as more formulations are coming in for PCOS, PMS. And so the whole objective is to find ways that the obvious is identified and we are able to heal ourselves, of course, through all the policies and methodologies which the government defines. But it's a world, we are living in a very, very different world today. So there are a lot of things which are changing very rapidly. So the global applications will be available to the Indian mindset very soon because of the world of internet, and the languages are going to change very fast. So previously
there were a lot of languages which have gone away. We don't realize that. Again, it's very obvious that video calls have become very common. But that is something which was never common 10 years back. So with that note, I'm available here for all the queries on anything. And with that smile, we should just understand this category, this compound very well, and respect the Ayurvedic community, because that is where their source comes from. And always thankful to Dr. Piyush Juneja and the other panelists that were here and the audience to give me this time. Thank you very much. Thanks, Gagan, and definitely we are looking forward to work and associate with you. You have a very exciting brand on hemp and cannabis as well. In this edition, you are launching that. I think it's a launch officially to the company for that particular brand, right? Tweak. So please have a look about their both of brands. And the person who brought him to us is Mr. Gagandeep Sethi. ये दो स्पीकर्स या दो पैनलिस्ट आखिरी में क्यों हैं? बिकॉज इन दोनों के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है. ये इस इंडस्ट्री के, मैं वो वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता, बट आप समझ जाएंगे डायरेक्टली. बिग बॉस नहीं, बिग बॉस नहीं है ये, बिग बॉस से सताए हुए लोग हैं. सो एक 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 वो एक्सपेक्ट भी हमें समझना है. they are emerging big bosses, you can say. ठीक है बॉस? So please, but मेरी रिक्वेस्ट है 10 minutes each. बाकी हम थोड़ा सा आपको और समय देंगे. क्वेश्चंस हम करना चाहते हैं, मतलब आई वांट टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ देम आर सिटिंग. आप लोग प्लीज आगे आइए, थोड़ी सीट्स खाली हैं. डॉक्टर साहब प्लीज आगे आइए, आगे सीट्स खाली है. थोड़ा बैक आप साइड में कर सकते हैं तो प्लीज एटलीस्ट आप बैठिए. इधर आइए डॉक्टर साहब, इधर आगे सीट खाली है प्लीज. सो we want their interaction as well. तो कुछ क्वेश्चंस ही पूछेंगे आपसे, मैं ही पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस, डोंट वरी. थोड़ा इंटरेक्शन में मजा आएगा ना सबके साथ. तो अभी 10-10 मिनट के लिए, ठीक है गगन जी? So Mr. Gagandeep Sethi is the man behind innovation, founder of 13 Extracts, India's first CBD brand. From there, Indian cannabis industry came to what we all are witnessing today. So thank you so much, Mr. Gagandeep Sethi ji, for supporting us, for bringing good people to connect us. He is an excellent man again. He is also very pure by heart, very much exhaustively, I will say, after implementing the entire aspects, enriched with the knowledge. So thank you so much again. Sethi Saab, stage is yours. Thanks. Hello everyone. A very big thank you to Dr. Piyush for making this happen. So I am Gagandeep Singh Sethi. I am representing my company Innovations India. Here are the products that we make. So Innovations India is a research-based company, mainly focusing on hemp-based formulations, and we are providing medical cannabis consultants and consultations and co-manufacturing services. We partner with talented entrepreneurs and we provide a 360-degree solution to them, from conceptualization, brand designing, product engineering, sales and marketing. We boast our ever-enduring zest to validate, create and launch new cannabis business concepts. From launching India's first CBD tincture brand 13 Extracts in 2019 to introducing synthetic CBD infused products by the brand of Zero CBD in 2022. Our journey has been extremely educating. So utilizing the vast knowledge we have gained in this journey, we are ready to help build and grow Indian cannabis startups with world-class expertise in every aspect, to create a market-leading brand and create products that Indian products can match the quality of internationally available products. Basically, we compress the time required from the idea phase to the shelving phase of the products and help the startups to overcome the bureaucratic barriers faced by this industry. We have a team of eminent chemists and formulators that we can provide you with the lowest turnaround time for where we develop an idea, we
create a product that is suited to that idea, and that making that product, branding it and placing it to the shelf. As Dr. Piyush said, medical cannabis should always be consumed under supervision of under medical supervision. I would like to add that not only the consumption is limited under the medical supervision. Medical cannabis is a plant where is a field. Even the product development should be actively involving Vaidyas and the Ayurvedic doctors that understand the basic concept behind it. See, poison is always in the dosage. No compound is poisonous on its own. Even the oxygen we breathe in is the cause of the aging process. So the poison is in the dosage. Like, for example, if we use THC, THC is very good in managing anxiety. But once you cross a particular level of THC in a person's body, that depends on the fat ratio in the person's body. So if you exceed that limit of THC will start giving opposite, in fact, negative results. It will create anxiety. It can create panic attacks. So that is where the medical fraternity is to be extensively and inclusively involved in product development also. So currently we are registered with Ayush for standardized cannabis extracts, where we have attained the purity levels that are currently available in US or Canadian markets. Apart from that, we have been working in other intermediaries and other excipients that we can help to enhance the effects of cannabinoids. For example, if you consume a CBD tincture, say 35 mg of dosage, via tincture route and dissolving in the mouth, to about 40% of it is absorbed in the body. Whereas if you use the same in an edible form, only 5 to 6% of that is absorbed in the body. We are working extensively to create a blend of ingredients that the raw mat- I'm sorry, that the raw material in a single dose remains the same, but the percentage of that absorbed by the human body is increased, and the effect of that can also be managed using various other compounds called terpenes. Like CBD and THC are same compounds, but many of you may have witnessed a particular strain makes you lethargic or makes you very calm and peaceful and gives you sleep, while similar compounds CBD and THC in another strain with different set of terpenes, they will provide you with concentration. If you are feeling too drained out, too stressed out, it will provide you with energy, even focus. So what compounds are delivering those effects? That are the terpenes. So in Innovations India, we have developed over 220 plant strain specific terpene blends, where without having the actual plant that is available in the US or Canada, you can achieve the same results with using those terpene blends that are already certified and have been tested safe for human consumption. Apart from that, we have many other what you can say excipients that help with absorption of active compounds in the body. So you do not have to. Cannabinoids are a very expensive raw material. You do not have to increase the potency of your single dose to attain that effect. You come to us, we can sit with you across the table, and we formulate a blend that can achieve the same result. Say for that a normal only cannabinoid containing formulation will achieve like 50 mg. We can help you do it, achieve the same effect with 25 mg product, cutting the raw material cost into half. And then moving on to proprietary formulations. We are the only company in India with over 280 proprietary formulations registered with the Ayush department, and all of them based on hemp. Currently, we are not working in the field of THC dominant strains or THC dominant formulations because of my personal perception about intoxicating.
We are the only company that are boasting CBD dominant strains and CBD dominant formulations. And CBD also in its own has lots of benefits, like in cosmetics or even pain management. And the most effective one is the mental health area. All and any of those allopathic drugs are habit forming, addictive, and come with lots of negative side effects. And I can assure you of that, and I can claim it standing on this dais in front of you, because I myself am a patient of major depression. And I quit all my allopathic medicines, and with consultation of a good team of psychologists and psychiatrists, used only medical cannabis to treat myself. So that is all I have to offer. You can have the detailed view of what all we have been doing, and the stall is right next to the conference room. I'm available for discussions. If you have any questions, you can shoot me, and I would be happy to help you out. Thank you. Thank you so much, Mr. Sethi. I request my team to bring some hemp mementos also to the backstage. We will be felicitating all the panelists in some time. So bring the hemp mementos also backstage. We also came to know that we have a very esteemed professional with us, Dr. Vinayak Tayade. He is the Honorable Physician to Government of Maharashtra. Dr. Vinayak, you are there? I think he is maybe in the expo area. So thank you so much again, and we have the last but not the least speaker of. Okay, so we have Arjun as well from Canada. Hi Arjun, how are you? So ये भी वही है, उसी कैटेगरी में है अर्जुन भी। वो उनके हम कल सुनेंगे इनपुट्स, या फिर आज हम एक इवनिंग में सेशन कर रहे हैं। तो जो बात हो रही थी ना अभी, तो सचिन अवस्थी जी से जब मैं पहली बार मिला, तो व्हेन आई हैड ए डिस्कशन विद हिम, एंड व्हेन यू अभी आप जब सुनेंगे इनको, तो ये चलता फिरता विकिपीडिया, आप इनको समझ सकते हैं काफी सारे एस्पेक्ट्स में हेम का, मतलब यू अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करते हैं, एंड ये तभी आया, आई थिंक इन्होंने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, ग्राउंड लेवल पर काम किया है। हम यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स कर लेते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस भी बुलाते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटी के चैलेंजेस होते हैं, जब तक आप फर्स्ट लाइन एक्सपोज होके नहीं करेंगे, you will not get to know about that. And Mr. Avasthi is doing that. He is at a level now in the same state Uttarakhand which we are talking about. So we will learn from his experience today. He was there in the last session, last also of this India Hemp Expo first edition, and hopefully he will be in the third edition as well. Thank you so much, Mr. Avasthi, for joining us today. वो जैसे भी विपुल ने पूछा ना कि इतना कुछ मैनेज कैसे कर ले, तो कभी कभी ये गलतियां भी होती हैं, तो प्लीज उसको माफ कर दीजिएगा। मेरे से वो होता नहीं है, मैं अपनी रिश्तेदारी में भी बदनाम हूँ, अपने रिलेटिव्स में भी, कि यार आप पर्सनल इनवाइट नहीं करते हो, कुछ करते हो तो कुछ बुलाते नहीं हो, इसको बुलाया उसके बुलाया। इन आवर पंजाबी कम्युनिटी वी हैव टू टर्म्स, फूफा एंड जीजा। तो आप कोई भी शादी करते हैं, when you do any marriage, two person will always be frustrated, irritated and angry with you. That is your fufa and your jija. So the same applies to India Hemp Expo now. So I want all of you to be my guest. आप मेरे दामाद बने, जमाई बने, पिता बने, अगर आप बड़े हैं दादा बने, अपना आशीर्वाद दें। आप मेरे भाई बने, बहन बने, whatever you want to be with me in this relation, please understand that. So this is your event, boss. ये आप सबका इवेंट है, आप सबको हर एक को पर्सनली इनवाइट करना, बार बार बुलाना, I will again do that. But maybe somehow with some people, मेरे क्लब के काफी सारे डॉक्टर्स हैं आज यहाँ पे, मैंने उनको नहीं बुलाया पर्सनली। ये उनका प्यार, उनका सपोर्ट है जो आज हमारे पास आए, एंड आई कांग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। आप प्लीज 2 मिनट खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह से। ये मेरे जेम्स हैं, इंडियन वैद्यास प्लेटफॉर्म शुरू किया था, तो ये मेरे जेम्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डॉक्टर्स। नहीं, सबको नहीं बोल रहा, 100 CR क्लब के डॉक्टर्स को सिर्फ, सॉरी सबको नहीं बोला मैंने, 100 CR क्लब के डॉक्टर्स, क्योंकि इनको देख लीजिए। नहीं, आप खड़े रहिए, 100 CR क्लब के डॉक्टर्स तो खड़े रहिए प्लीज।
अरे आप ही की तो मार्केटिंग करनी है 2 दिन, तो ये देख लीजिए, ये जेम है, ये मेरे पिलर्स हैं, मेरी स्ट्रेंथ है. द प्लेटफॉर्म वी हैव स्टार्टेड indianvadyas.com. They were the first 100 to support us in that initiative, where we are uplifting the financial level of all the doctors in India. Still Ayurveda doctors at a very pathetic level. ठीक है, with due respect to the ministry, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एक रियल प्राइवेट प्रैक्टिशनर इन आयुर्वेदा के अभी भी काफी सारे चैलेंजेस हैं. एंड विद दिस सेगमेंट प्लीज सिट. तो आप सब लोग प्लीज मिले, इंटरेक्ट करें. एंड बाय द वे, मेनी ऑफ देम आर लीडिंग प्रैक्टिशनर. डॉक्टर पुनीत इज वन ऑफ आवर पैनलिस्ट. All of them are leading practitioners right now, emerging, and Indian Vadyas is with them. So don't worry, इनका अगले 6 महीने और 1 साल में काफी बिजनेस और रेवेन्यू बढ़ने वाला है करंट रेवेन्यू से. So all of you should be connected with him. All of you should be discussing your company, your brands, your products with all of them, and many more will be joining. अभी 2 बजे तो बम्बार्डमेंट होने वाले डॉक्टर्स का. मैं डर गया जब एसोसिएशन से हमने रिक्वेस्ट करी, एंड डॉक्टर थे हेड, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब वर्किंग डे है फ्राइडे. आई डाउट कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अपना क्लिनिक का प्रैक्टिस छोड़ के मुंबई में आपका इवेंट अटेंड करने आएगा. आई डाउट. एंड यस्टरडे ही वाज सो हैप्पी कि डॉक्टर साहब, और उन्होंने एक आइडिया दे के, अच्छा जितने डॉक्टर नहीं है ना, तो आप स्टूडेंट्स, हम पोद्दार कॉलेज वर्ली है. मैंने कहा बॉस, सारे आयुर्वेदा इवेंट्स में वही होता है, सारे मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदा इवेंट्स में वही होता है कि वो स्टूडेंट ठीक है. मैं कल भी गया बनारस, आई वाज इन बनारस. आप मेरा इंस्टा का हैंडल देखना, कल से लेके आज तक पूरा वहां पर स्टोरीज, मतलब आई वाज फीलिंग लाइक ए सेलिब्रिटी. 1 घंटा तो मैं फोटो खिंचवा रहा था स्टूडेंट्स के साथ. वो सर्टिफिकेट पे पेन, जो सीनियर थे, आई एम वेरी जूनियर, तो उनके साइन नहीं देते थे, आस्क फॉर माय ऑटोग्राफ. तो वो लगता है कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर देम एंड दे रिस्पेक्ट योर नॉलेज. बट in these kind of events, students are there to visit the expo, but not in the conference. The conference should be focused to the private practitioners, so that they can infuse, they can implement your solutions in their practice. So that is the whole agenda of bringing all of them together. So today post lunch we have so many doctors with us, so please meet them, greet them, attend them at your stalls. They already started coming in, so after the session you can have interaction with them. So these are my pillars, and we again congratulate and appreciate all of you for this initiative. तो मैं कह रहा था कि वो बुलाना, बताना, इनवाइट करना, प्लान करना, उसमें थोड़ा वीक हूँ. तो सॉरी डॉक्टर साहब, मेरे बड़े सीनियर हैं, अपने आप इनको पता था इसकी इवेंट के बारे में. मेरी एक बार थोड़ी सी बात हुई, बट पूरा सिस्टम नहीं बन पाया. बट मैं अगेन क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत जूनियर और बहुत छोटा हूँ आपसे. मेरी इस गलती को माफ करो और अगली बार इस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा. ऐसे काफी सारे लोग छूट जाते हैं कई बार. सो वो गलती भी है, प्लस वो एक चैलेंज है जो आपने बोला ना विपुल ने, कि आई एम मैनेजिंग, आई एम ए क्लिनिशियन. इस बार मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम संडे ओपीडी रखी है अपनी, बिकॉज ये 2 दिन फ्राइडे सैटरडे ब्लॉक है, और पेशेंट्स का इतना इन्फ्लो है कि आवर स्टाफ वो डर गई थी कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हो, क्या होगा. मैंने कहा आप संडे पूरा खोल दो. वो इतनी खुश है कि अभी तक पूरा फुल हो चुका है. मेरे घर में मेरी वाइफ के चाचा के बेटे की शादी है, वो अलग नाराजगी चल रही है कि इवेंट के बहाने कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट शादी में शक्ल दिखाने के लिए आ जाना, शक्ल दिखा देना कम से कम, वरना उसके बाद शक्ल मत दिखाना घर में. सो वो थ्रेड के अंदर सारा काम करना पड़ता है. तो सर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए माफी दें. So I request Mr. Avasthi now on the same note to please address her. Sir please request है, टाइम का थोड़ा रेस्पेक्ट करें. ये रहेंगे शाम तक, मैंने पता कर लिया है. मैंने बताया ना, चलता फिरता इनको लेके कहीं भी बैठ जाना, टाइम का पता नहीं चलेगा. तो ये रहेंगे शाम तक, रात तक अवेलेबल है. आगे की बुकिंग्स किसी ने करानी है तो वो भी अवेलेबल है, ओपन है, वो आप देखो. लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्तियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए. ये मैंने लाइफ में अपने पूर्वजों से सीखा है. तो ऑन दैट नोट मिस्टर अवस्थी जी, ओवर टू यू. थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू पीयूष जी. मैं हिंदी में बोलूंगा. कुछ लोग ज्यादा समझते हैं हिंदी, हम ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, इसलिए. भांग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 1985 से हमने भुला दिया. हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि एक ऐसा पौधा जो वेदों में वर्णित 5 सबसे बेहतरीन पौधों में से एक, वो पौधा, जिस पौधे को हम भगवान शंकर को जानते हैं, वो पौधा जो सनातन में 7 दिन साल में आपको खाना मजबूरी है, उस पौधे को हमने डस्टबिन में डाल दिया. 5 महाशिवरात्रि, एक होली
सॉरी 5 सावन सोमवार, एक महाशिवरात्रि और एक होली, 7 दिन ये प्रसाद में। तो ये हमारा सोशल फूड है, आप कह सकते हैं। 1985 में एकदम से सरकार ने मन बनाया कि इसको बंद करना है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, नया नया यूएन बना था, इनने एक मन बनाया कि यूएन ने बोला कि कैनबिस को हमको ऑल ओवर वर्ल्ड से खत्म कर देना। यूएन ने सिंगल नार्कोटिक कन्वेंशन में इसको बैन किया और 25 साल का समय दिया। हिंदुस्तान में किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि 25 साल तक ये भांग बंद करे। उसका रीजन था ये हमारा सोशल, हमारे जो गुरु परंपरा के लोग हैं, जो नागा परंपरा के लोग हैं, जो अघोरी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पीयूष जैसे पुराने डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहे, तो हिम्मत नहीं। 1985 में रोनाल्ड रीगन थे, राजीव गांधी जी गए, हाथ वाथ मिलाया, उन्होंने बोला ये तो करना पड़ेगा। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर में आके इस पौधे को हमने बैन। किसी भी कानून को जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए और इकोनॉमिक एस्पेक्ट होना चाहिए। उसमें कहीं भी संसद में सहमति नहीं बनी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में सबसे लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस जो आई वो 1985 में आई, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। 30 तमिलनाडु के सांसद थे, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो टोटल 445 सांसद थे कांग्रेस के साथ। राजीव गांधी लेके आए इसको फ्लोर पे बिल किया। ये स्थिति बन गई कि नार्कोटिक एनडीपीएस एक्ट पास नहीं हो सकता। पार्टी के चीफ विप थे गुलाम नबी आजाद 1985 में। उनको ऑर्डर किया राजीव गांधी ने कि आप इसको बैन करो। विप जारी हुई और विप के द्वारा ये कानून बना। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम कानून हुए जिन कानूनों को किसी एक नेता ने अपनी मर्जी से बना दिया है ऐसे कुछ कानून, पर एक अमेंडमेंट किया गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा हास्यास्पद कानून तो हिंदुस्तान में कोई दूसरा। हम एनडीपीएस एक्ट को जोक मानते हैं, लोग डरते हैं इससे, हाथ पांव फूलते हैं लोगों के एनडीपीएस का नाम सुन। कारण है नॉन अवेलेबल है, 3 महीने तक जमानत नहीं होगी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, सारे लोग। अगर किसी को पुलिस वाला पकड़ के ले जाए और ले जाके थाने में बिठाते कि आप उसे बन गया आपके केस, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, या तो उसका टाइम पीरियड नहीं निकल जाता, या ये फैसला नहीं हो जाता कि आप निर्दोष हैं। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें जाने के पहले 10 बार सोचेगा। और लीगल एस्पेक्ट जब तक आप नहीं समझेंगे ये इंडस्ट्री ग्रो करना बहुत मुश्किल है। मैं इन्हीं एस्पेक्ट्स के लिए एनडीपीएस में बहुत मजेदार बात आपको, भांग के फूल को गांजा कहते हैं, marijuana, वे हैम, मालूम नहीं क्या क्या जी। ये बैन है ऑल ओवर इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है सेक्शन, पर उसके अंदर उगने वाला बीज लीगल है, कहीं भी खरीद सकते, कहीं भी बेच सकते। इससे बड़ा मजाक दुनिया में हो सकता है? हो सकता है। हिंदुस्तान में महिलाएं बैन है, पर बच्चे हो जाए तो वो लीगल है। बिना महिलाओं के बच्चे होंगे तो, और वो महिलाएं मतलब वो पौधा जो है वही बैन है, बीज ही बैन, फूल ही बैन है। जब फूल होगा नहीं तो बीज आएगा कहां से? मजाक बना के रखा। ऐसा 1-2 चीजें नहीं है, 50। उत्तराखंड में सर बैठे हैं, सर को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड में वो क्या है मैं बताता हूँ। इनके यहाँ एक कानून है, उत्तराखंड में भांग का जंगली कटान हो सकता है, भांग उगाई जा सकती है। हिंदुस्तान में मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जिसके पास जंगली भांग के काटने का भी लाइसेंस है और उगाने का भी लाइसेंस है। ये दोनों लाइसेंस एक साथ किसी और के पास है, पर उस भांग को आप उत्तराखंड के अंदर खरीद बेच नहीं सकते। आप क्या उगती है, जंगल में होती है,
पर आप उसको खरीद बेच नहीं सकते उसको स्टेट के बाहर। अब जब हम खरीद ही बेच नहीं पाएंगे तो उत्तराखंड में भांग का प्लांट लगा के औद्योगिक आयुष का प्लांट कैसे लगाएंगे? जब हम उस स्टेट के अंदर खरीद ही बेच नहीं सकते हैं तो दवाई कैसे बनाएंगे? मध्य प्रदेश और जबरदस्त है। मध्य प्रदेश में आप आओ, बनाओ, खाओ, पियो, बेचो, सब करो, उगा नहीं सकते, काट नहीं सकते। ऐसे ही हर स्टेट का आपको अलग सिस्टम मिलेगा। राजस्थान में काट लीजिए, पंजाब में काट लीजिए, उगा लीजिए, खा नहीं सकते, बेच नहीं सकते। 29-30 राज्य है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें है ही नहीं कानून। आपको जान के आश्चर्य होगा और मेरे को शर्म, सही में एज ए हिंदू होने के नाते मैं अपने आप पे शर्म करता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शंकर को भांग अर्पित कर सकते, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 2 मध्य प्रदेश में, 1 उत्तर प्रदेश में। बाकी 9 ज्योतिर्लिंग हमारे शंकर जी प्यासे बैठे, भांग नहीं मिल रही उनको, मजाक है। हमें दर्द है इस बात। मेरे पास 5 साल पुराना लाइसेंस है और भगवान मालूम नहीं आज की डेट में क्या स्थिति है, पर 2 साल पहले तक उत्तराखंड का सबसे बड़ा लाइसेंस मेरे पास था कल्टीवेशन। मैंने एक पौधा नहीं बोया है। क्यों नहीं बोया मैं देख रहा हूं। आप राष्ट्र के बारे में बात करिए, 0.3% THC का नियम बना दिया। 0.3% THC का सीड अवेलेबल ही नहीं है हिंदुस्तान। आप बाहर से मंगाओगे तो ये पौधा जो है इसमें एक नर होता है, एक मादा होता है। नर जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेट करता है। हम एक पौधा लगा देंगे पहाड़ पे, 10 किलोमीटर तक क्रॉस पॉलिनेट करेगा। बिना नशे की भांग हम विदेश से लाके अपनी आयुर्वेदिक भांग को, जिससे महाराज चरक जी ने, जिसमें पतंजलि ने जिन्हें दवाइयां बनाई, उस भांग को हम क्रॉस पॉलिनेट करा के उसको बिना नशे की कर दें। आज हमारे नागा सन्यासी 10 ग्राम भांग कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, ध्यान कर लेते हैं, फिर 1 किलो खिला दो, कुछ नहीं होना। त्रिलोक विजयावती, मुनक्कावती और जितनी दवाइयां हैं इनका सैकड़ों करोड़ों का काम। गाजर घास हो जाएगी भांग अगर आपकी 0.3% THC आप लगा, किसी को सुनना नहीं, समझना नहीं। हमारे अंदर पेन है तो चीखते हैं, लड़ते हैं पीयूष भाई से, जब भी वो होता है कि पीयूष भाई थोड़ा सा करो। आप लोग आइए, सब बात करिए, बैठिए, एक एसोसिएशन, एक काम कर, इसको जल्दी से जल्दी रेगुलेट करा। यूएस में 27 बिलियन डॉलर का मार्केट है, 60 बिलियन के ऊपर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की भांग से बेहतर भांग कोई है ही नहीं। मलाना क्रीम के नाम से जो चरस बिकती है एम्स्टर्डम में, सबसे महंगी। रिक्रिएशनल मेडिसिन में जो भांग बनाते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, त्रिलोक विजयावती का कोई तोड़ नहीं है, पर लोगों को नहीं आता। सरकार अगर इस पे ध्यान दे, सब बैठे हैं, अगर अनुमति दे उद्योग लगाने, इतना एक्सपोर्ट जनरेट होगा आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ मेडिकल कैनबिस होगा, मेरे पास पूरा का पूरा पौधा है, जिसको बीज चाहिए बीज ले जाओ, जिसको फाइबर चाहिए फाइबर ले जाओ, जिसको हर्ब चाहिए हर्ब ले जाओ, जिसको जो बनाना हो वो बनाओ। बायो इथेनॉल से लेकर बायोप्लास्टिक तक कुछ भी बनाओ। आपके यहाँ जोशीमठ दरक रहा है, लैंडस्लाइड होती है, बहुत प्रॉब्लम है पेपर इंडस्ट्री के कारण, पेड़ काटते हैं। सबसे अच्छा सोल्यूशन है, दुनिया में कोई भी इतना बेहतरीन पौधा नहीं है जितना अच्छा ये है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मेडिसिन देता है, फूड देता है, आपको कपड़े देता है, सब देता है, ऐसा कोई पौधा नहीं। और सबसे बढ़िया कंक्लूड करूं, हम अपने भगवान को जो भी जानते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तिल हो, जौ हो, हम अपने भगवान को भांग जानते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसको सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। हम इसको लीगलाइज नहीं करना चाहते, हम इसको रेगुलेट करना चाहिए।
रेगुलेट वैसे जैसे शराब रेगुलेट है। अब आप एक बात बताइए, बड़ी मजेदार बात, संतरा, गन्ना और आलू सबसे शराब बनती है? सबसे बनती है, महुआ से बनती है। आप शराब बना सकते हो घर पे? नहीं बना सकते। क्यों? बैन है। तो अगर शराब बैन है और शराब को आप बैन करते हो, गुजरात में आपने की हुई है, आपने बिहार में की हुई है, आप संतरा भी बैन कर दो, गन्ना उगाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उससे शराब बनती है। लॉजिक क्या है? भांग के पौधे से चरस बनती है, इसलिए भांग का पौधा बैन है। तो भाई शराब भी तो संतरे से बनती है, कर दो बैन। आपको प्रोसेस को बैन करना है तो आप प्रोसेस को बैन नहीं कर रहे हो, आप जड़ को बैन कर दे रहे हो। ये गलत है। अगर प्रोसेस को बैन किया जाए, चरस बनाने की प्रोसेस को आप बैन करो, बाकी चीजों को आप रेगुलराइज करो। उस तरह जैसे शराब बनाने की फैक्ट्री के आप लाइसेंस देते हो, भांग उगाने के लाइसेंस दो, रेगुलेट करो। आप खुद खरीदो, खुद बेचो। सरकार मेडिकल कैनबिस के लिए लोगों को बट की जरूरत होती है, बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है कि भाई बट जो भी आएंगे वो हम रखेंगे और हम ही बेचेंगे उन लोगों को, जैसे अफीम बेची जाती है। तो वी कैन डू। तो मेरा उद्देश्य है किसी तरीके से भगवान शंकर को भांग लौटाना और देश को अच्छा राजस्व पैदा करना। इसके लिए हम इंडस्ट्री बिल्डअप करने में अपना काम तो कर ही लेते। बस इतना कहना था आप लोगों से। धन्यवाद अवस्थी जी, थैंक यू सो मच। सरदार जी की तरफ से एक ऑब्जेक्शन है, मैं क्षमा के साथ, इन लोगों से बड़ा एहसान किसी का नहीं है। हम अगर बचे हैं तो इनके कारण। गुरु गोविंद सिंह जी का बड़ा एहसान है हमें लोग। निहंग संत जो होते हैं वो जब युद्ध पे जाते थे तो जब लौटते थे तो एक सब्जी बनती है, सूखा कहते हैं, वो सूखा की सब्जी भांग से ही। ये गुरु ये जो है ये सिख संप्रदाय से। भांग पे आप बात करो तो आप बौद्ध धर्म में जाओ, हिंदू धर्म में जाओ, सिखिज्म में जाओ, जहां जाओ हर जगह आपको भांग मिलेगी। हिंदू धर्म से निकले हुए जितने धर्म सब में आपको भांग मिलेगी। आपको बाइबल में भी कहीं कहीं ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो दैवीय है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ये कॉन्शियसनेस से नशा होता है, मैं स्वीकार नहीं करता इससे नशा होता। ओपियम ज्यादा एडिक्टिव है, शराब ज्यादा एडिक्टिव है, ये कम एडिक्टिव। और दुनिया की सबसे ज्यादा एडिक्टिव बड़ी चीज क्या है वो भी मैं बता दूं, पर ये थोड़ा सा कुतर्क हो जाता है, नहीं बोलना चाहिए। है यहाँ पे कोई आदमी जो ये हिम्मत करता हो कि वो नमक और शक्कर छोड़ दे 3 दिन के लिए? उससे बड़ा एडिक्टिव है कुछ? हम कहते हैं लीगलाइज मत करो, रेगुलराइज करो, इससे पैसा बनाओ, इससे दवा बनाओ, लोगों का स्वास्थ्य सुधारो, रोजगार जनरेट हो। पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे एंटायर 10 स्टेट की बात कर रहा हूँ। जो पलायन हो रहा है रुक जाएगा। 1 एकड़ में 5 लाख रुपए एक फसल में आता, साल में 2 से 3 फसल आता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर सरकार ध्यान दे, रोजगार जनरेशन में इससे बेहतर कुछ नहीं। उत्तराखंड सरकार को तो हम प्रपोजल देना चाहते हैं कि ये करें। तो अगर हम आके करते हैं, हाथ से हाथ मिला के साथ जाते हैं। कोई यहाँ पे है जो फाइबर पे काम कर रहा है, वो हमसे फाइबर चाहता हो, आए करें। हम जगह देते हैं, हम व्यवस्थाएं देते हैं, आइए करिए, इस्टेब्लिश करिए इसको। धन्यवाद। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। हम डॉक्टर सुश्रुत, so Dr. Shushruth is there from Mumbai. He is right now with very learned professional Dr. Pradeep Mahajan. We have a session of sir tomorrow afternoon 2 p.m. and he is a very well experienced dentist. However, working with Dr. Pradeep Mahajan on many other aspects like stem cell research and including medical cannabis, they are very pro. As I said, we appreciate and we respect other pathy doctors as well. So thank you, Dr. Sushruth, for taking your time for this session. And tomorrow we are looking forward to have you, Dr. Pradeep Mahajan, and all the doctors from your fraternity for that session at around 2 o'clock. Thank you. Sure, sir. Thank you.
So we will be opening the session now to all of you. आपके कोई queries हैं, questions हैं, you want to ask anything from the panelists, from me, for this show, any query for overall domain. So please feel forward to ask right now. And then we'll break. We have a doctor conference from 2 o'clock. At 5:30, I request all the industry people who are sitting in the audience also. अगर आप किसी भी level पर industry से connected है तो 5:30 we have an industry CEO session today. Followed by the India Hemp Awards, and till 7:30 we will conclude the session. Tomorrow again I repeat 11 o'clock is a very important session. तो आप में से जितने लोग stay back कर रहे हैं कल आना चाहें जरूर आए उसको attend करें because manufacturing, legal, cultivation, there are leaders like Buffalo extraction system will be launching some innovation technology there in the session. There will be other panelists, very learned professionals. We will having video message from Dr. Priyanka straight away from US, and several other brands and companies who are developing nice manufacturing solutions for all of you. That will be at 11 o'clock. And 2 p.m. as I said, we have a very important session on very important part of wellness, cosmetics, all the leading cosmetic. We have Rajneesh from Mumbai there. Rajneesh, you can just raise your hand. They are one of the emerging brand in the cosmetic. We have cosmetic range from Ananta Bros. You can see the stand here. So all these companies are bringing excellent cosmetic products as well to this industry. And the leading brands in the cosmetic have already launched their hemp range. So nutrition, cosmetic, wellness, allopathic system of medicine, doctors, everything will be there in the 2 o'clock session. So please join us for the both sessions tomorrow as well. Now I open the discussion session. All of you are, please, you can raise your hand. Any one of you want to ask any question to all our panelists, to me, please feel free to discuss. Let's make some interaction today for next few minutes, and then we will proceed for felicitation and concluding of the session. Anyone wants to have any question, any query, anything you want to discuss? No? Yeah. Yes, please. You can just introduce yourself as well, and maybe then you can ask. मैं विवेक गुप्ता, मैं लखनऊ से हूँ और सबसे कम पढ़ा लिखा यहाँ हूँ। ये सब पढ़े लिखों की दुनिया है और मैं हेम्प के लिए पिछले 30 साल से खोज कर रहा था, क्योंकि मुझे, और शायद अवस्थी जी ज्यादा जानते होंगे, हिंदुस्तान से हेम्प करके, मैं कारपेट इंडस्ट्री से हूँ, फैब्रिक और कारपेट इंडस्ट्री से, मेरे यहाँ से यूपी से कम 1 लाख किलो माल हेम्प के नाम पर एक्सपोर्ट होता हो तो कोई बात नहीं, और होता वो कॉटन जी नहीं, वो जूट होता है सर, जूट होता है। मैं एक बार जर्मन एक स्टूडेंट्स के साथ में था, तब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि साहब हेम्प और जूट में क्या अंतर होता है। मेरी लैंग्वेज में जूट पानी में जाके कमजोर होता है और हेम्प पानी में जाके मजबूत होता है। और मैं जब मुझे एक मेरे दोस्त ने इस इवेंट का एक भेजा तो मैंने फ्लाइट पकड़ी और चला आया यहाँ। और आते ही मैं इस पहले वाले क्योंकि बाकी मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं जानता ही नहीं था कि हेम्प क्या होती है। डेफिनेटली मैं उत्तराखंड मेरे बगल में है, मुझे इसके लिए अगर धामी साहब से मिलना भी पड़ेगा तो मैं इसके लिए जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं अभी उत्तराखंड घूम के आया हूँ। पहले जो आपने कहा कि वहां पर पहाड़ों पे बहुत बड़ी इसकी स्कोप है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। मुझे रियल हेम्प अगर मैं सप्लाई कर सकूं तो मुझे मालूम है मैं टन्स एंड टन्स ऑफ, या आपके पीछे एक तिलकधारी खड़े हैं, इनका नंबर ले लीजिए, ये आपके बहुत काम के। ठीक है सर, बिल्कुल ले लूंगा सर, मैं तो किसी का भी ले लूंगा, तो आपका भी ले लूंगा सर, क्योंकि ये वो चीज है जिसलिए मैंने कहा आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरे को आपके अच्छा जो आपने बताया। मुझे लगता है मैं सोच रहा था एयरपोर्ट से उतर के आया क्यों होगा, क्या जरूरत है मेरी, मुझे सच में नहीं मालूम। आपको भोले बाबा बुलाए। हाँ सच में मैं ये कह सकता हूँ, मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस सेमिनार एंड स्पेशली मौसी जी, आपने तो पूरा घुमा दिया, जो कह रहे थे बिल्कुल सही है सर। मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। थैंक यू। एंड आपकी नॉलेज के लिए, सॉरी आई मिस्ड योर नेम, कैन यू विवेक गुप्ता जी, आपकी नॉलेज के लिए ऑलरेडी हम शायद कनेक्टेड नहीं हो पाए थे, आप प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म से भी कनेक्टेड रहे। हमने यूपी में ऑलरेडी सबमिट किया था इन्वेस्ट आयुष, जिसमें पूरा का पूरा हेम्प, वहां पर एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जीएन सिंह, सेक्रेटरी आयुष, सेक्रेटरी
अदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड उसमें हमने बाकी भी डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करा है। काफी जल्दी वहां पर एक पूरी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग होने वाली है जिसमें द एंटायर स्टेट इज वेरी सीरियस ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल आपने उत्तर प्रदेश की बात करी तो वहां का अपडेट। सेकंड, उत्तराखंड, एज यू आर सीइंग द ऑफिशियल डेलीगेट्स आर हियर and very soon the secretary also are saying that do some kind of event in our state as well to bring the entire industry and to see how we can take it forward। तो हम दोनों स्टेट्स में अवस्थी जी और बाकी जो हमारे साथ इसमें हैं सपोर्ट में, तो हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग आगे बढ़े एंड जो भी इसमें बॉटलनेक्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं वो जल्द से जल्द एड्रेस हो और आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी। सर आपने जो कहा कि समिट्स के अंदर बहुत ज्यादा बातें जो है ना जी लेवल से ऊपर होती है, इसलिए मैंने जो है मैं एक ऑलरेडी इवेंट करने के उसमें हूँ, लेकिन आपसे मैं जरूर टच में रहूंगा। अगर मुझे कुछ भी मिला मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा था जी। एक्चुअली जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इस तरह की चीजें जो है जो बेसिक्स होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी तो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने जो सीट को रिकॉग्नाइज किया है वो हमारा उस अकेले से जो पहाड़ में जो लोग भांग के बीज इकट्ठे करते थे उनकी आय 4 गुनी बढ़ी है। जो 60 रुपए किलो बीज बिकता था वो आज 250 रुपए किलो बिक रहा है। तो उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है उसने चक्कर लगाना शुरू किया। और अगर गांव में इकोनॉमिक्स का बीज घूमने लग जाए तो जो जनरेशन होता है जीएसटी का, जो जनरेशन होता है दूसरी चीजों का, लोग गाड़ियां खरीदते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं और घर वापस लौटने का सोचते हैं, उससे जो इकोनॉमिक बूस्ट होता है वो बहुत शानदार है। एक बात और, उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉलिटिकल लोग समझते हैं। होता क्या है कि जो हमारी विधानसभाएं होती है वो जनसंख्या पे आधारित होती है। इतनी जनसंख्या होगी तो कम से कम तो एक विधानसभा होगी। पहाड़ों से हो रहा है पलायन, सारे लोग नीचे आ गए, तो उत्तराखंड की जितनी सीट्स हैं विधानसभा की उतनी ही रहेंगी, पर पहाड़ की कम हो जाएंगी, नीचे की बढ़ जाएंगी। तो जब विधायक नीचे बढ़ जाएंगे तो ऊपर विकास कैसे होगा? आप टूरिज्म पे काम करना चाहते हो तो टूरिज्म आपका शहरों भर में थोड़ी है, टूरिज्म तो आपका पहाड़ पे है, पहाड़ पे भी तो होना चाहिए विकास। तो मजबूरी है सरकारों की पलायन रोकना, वहां पे लोगों को बसाना। अगर नहीं बहुत बड़ा एनवायरमेंट डिसबैलेंस होने की संभावना। ऐसी चीजें हैं जो करना चाहिए सरकार को, उसमें सरकारें लगी। नमस्ते सर, मेरा नाम है जी एडवोकेट डॉक्टर। नमस्ते जी, आप बैठे ना जी। आप ये सॉरी, आप इंट्रोडक्शन करें आपका। अगर किसी पैनलिस्ट को स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उनको जरूर एड्रेस करें, राइट? प्लीज। एडवोकेट डॉक्टर, आई एम मेडिकल फील्ड since last 5 years. Okay. सबसे बिशप का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने इस विषय पर बहुत विस्तृत निवेदन दिया है। मैंने सिर्फ मुझे इस बारे में 2 चीजें कहनी है। सर, कोई भी लॉ बनता है तो उस स्टेट के विधानसभा या विधान परिषद में जाता है। एंड मैं अभी रिसेंटली जो NCISM एक्ट हुआ है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो 3 एक्ट पास हो गए, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। These are 3 main acts which has been amended in recently 2020 2020 में। ये कोई भी एक्ट पास होता है तो 99% हमारे जितने भी कोई नोटिफिकेशंस है वो पार्लियामेंट या कोई भी विधानसभा जाते हैं, 99% फटक से आता है, सब लोग हाथ ऊपर करते हैं और पास हो जाते हैं। इट इज वेरी पुअर सिचुएशन कि हम लोग हमारे जो भी इस फील्ड में जो लोग सतर्क है, जिसका ध्यान रखते हैं, उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और हमारा जो भी कहना है, वी शुड कन्वे आवर से टू दैट विधानसभा, विधान परिषद एंड इवन पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड this thing. And one thing I wanted to ask, सर, आपने उत्तराखंड और एक स्टेट में आपने पता है, उस स्टेट में कोई डॉक्टर या कोई इसको अपने हेम्प का कोई प्रोडक्ट बेचते हुए या यूज करते हुए कोई कन्विक्शन हुआ है क्या? इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। अवस्थी जी, लेट मी, आप फिर ऐड आउट कर सकते हैं। आप बैठिए प्लीज। थैंक यू।
बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया. हमने सोचा था इसको हम डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में या मे बी टुमारो डिस्कस करेंगे, बट टुडे we can discuss this. And I'll start this with one real challenge we faced. You mentioned about NCISM. So our honorable council, that is the National Council of Indian System of Medicine, they wrote us a few months back that please come to our office and you are promoting medical cannabis. We need to understand. So we went to their office. They had a set of questions, and they were also confused. Ki, as an Ayurveda practitioner, how you can practice. First confusion was कि it is coming under the purview of narcotics. So when we showed them the NDPS Act, that it is clearly mentioned that the leaves and the seeds are out of the purview of NDPS Act. First thing, if you read NDPS Act, the definition of bhang is whatever is there from the leaves and seeds that has to be excluded, and the flower and bud that is leading to ganja and charas are included in the narcotics or NDPS Act. Point number one. Second, it is already mentioned in the Schedule E1 list of Ayush in 2016 that we can practice Bhanga as an Ayurveda doctor on the prescription model, which we have already discussed in the earlier discussions when we started this session. Second. Third, they then was also again confused. So we did an RTI to narcotics that I am an Ayurveda practitioner and I'm using the medicines from the seeds and leaves. Does this come under the purview of NDPS Act? They said no. The reply was no. Seeds and leaves are out of the purview of. No, nobody will say no in the government, but they said again in a reply, the seeds and leaves are out of the purview of NDPS Act. And it's understood that it does not come under the narcotics. And as a clinician, as a practitioner, you just need to ensure that company has a valid license, a manufacturing license. Either they are the manufacturers or they are producing from other manufacturers, so they have to have a valid manufacturing license. Second is their product approval from the concerned department. So if they are having the manufacturing facility in Madhya Pradesh, so is there a product approval from the Department of Ayush or Ayurveda from Madhya Pradesh for that particular medicine? And third is the additional testing, the CEO certificate of analysis, the toxicity testing, whatever additional testings, it is a bit dynamic, but there has to be some testing of their products that it is, and the ingredient is mentioning the Vijaya leaf powder or extract or the hemp seed oil. It does not have flower and bud as an ingredient, which is not allowed. So if all these requirements were still, NCM was not satisfied. So they officially, their delegates officially visits around 7-8 doctors, 100 doctors को इसके बारे में पता है क्योंकि इनके ही कुछ fellow doctors के clinics पे वो गए. So first of all, doctors feel scared कि NCSM आ रहा है, some kind of a raid or what kind of they are doing. But उन्होंने बोला कि नहीं हम audit करके देखना चाहते हैं कि whether you are practicing ethically or in the name of medical cannabis something else is going on. And nobody it was there, nowhere they have found everything was ethical, documented, purchase bill were there, sale bill were there, always maintain sale and purchase record. If you are under 40 हम training में भी देते हैं, but you have to maintain. Dr. Anish Shukla, hello sir, he is the HOD Poddar College in Worli. Dr. Anish Shukla, one of the speaker of our event, very learned senior professional from our Ayurveda fraternity. Thank you sir, thank you so much. You all can have lunch sir, we are just concluding in 10-15. Arey, Dean ma'am is also there. Thank you so much. Sorry. Professor Sampada Sant ma'am is there. She is the Dean of Poddar Ayurveda College, Worli, a very renowned and famous college of Mumbai. We are very honored, ma'am, to have you in our event today. I was not at all expecting her. We tried to contact her, but her busy schedule is like this. She's a very senior, learned professional of our fraternity. So thank you so much, ma'am. Very soon, Dr. Reddy is also joining us, the director here in Ayush, and we will request both of you to officially inaugurate the ribbon cutting ceremony. We were just waiting all of you to join us today for that. So we'll be doing that in some time. So we are just discussing, ma'am, some queries in the session. So this is the thing, Dr. Saab, and later on we can have a detailed session tomorrow also to discuss all these legalities. So you are there tomorrow, so please attend that. Any other query, any other input you want to share, or we can conclude, please, sir. You can have the mic. Please hand over the mic to him. Thank you. My name is Aniruddha Nandi. I am a medical researcher and a metabolic engineer. I would like to take forward Mr. Awasthi's proposition saying potatoes, oranges, and everything should be banned. In fact,
all of us sitting here should be banned because our bodies produce endocannabinoids. To all the panelists sitting on the stage, I see no reason as why India should not be in the forefront of therapeutic cannabinoids. We need to stand together and show the regulatory authorities and the powers that be that cannabis is the need of the hour. My main field of research is in cancer. Believe me, the kinds of scenes I see from end-stage cancer patients, even with the opioids, it's pitiful. Cannabis is godsend for them. And we have to make sure that it is, as he rightly pointed out, it should be regulated, not the kind of legalization that they're trying to do. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We are very much honored to have you in our session today. Thank you so much. So actually, Dean ma'am needs to leave for an urgent meeting, so we just quickly felicitate her. And again, thanks, ma'am. And if you can just share a few words as a blessing to us, we'll be really feeling honored with your blessings. Please, ma'am, join us on the stage. Thank you. First, I'm very much thankful to invite me for this special function. I don't know anything means I'm not so मीन्स मैं ये बता सकती हूँ कि एक्चुअली मुझे कुछ इस कैंप के बारे में पता नहीं था. ओनली आई एम रिसीविंग सम मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, बट टुमारो मॉर्निंग डॉक्टर नीलेश और समथिंग, नीलेश जोशी इनवाइटेड मी, मीन्स come for a few minutes, so I came here and I'm very much thankful and I congrats full team to organize this wonderful session. I visit all different stalls. Some medicines or some drugs are new for me, but I will try my best to take the details of that different stall medicines. And thank you very much. ये खत्म कर दिया क्या इन लोगों ने? कुछ खत्म कर दिया क्या? Thank you so much, ma'am, and I request Dr. Asha to felicitate our Dean ma'am today. And thank you so much for taking time and joining us and giving your blessing. Dr. Asha, please, thank you. Thank you. And I request my team members to help them for the carry bag. Kanchan, you can help. Please, take. Thank you. And now I request each one of the panelists also to please accept our small token of appreciation. And thank you again for your time. We'll be having the next session very soon, the doctor conference. Just let's felicitate all our panelists, doctor, and you can meet all of them at their stalls. So first of all, I request again Dr. Asha to please come forward and accept our small token of thanks. Thank you. All these mementos are made by the hemp food only. Vikram, sorry, Dr. Pandey. I think he is our guest today. Please, Dr. Sir. I request Dr. Hemant also to please join us on the stage for the felicitation. They both have today morning, they have landed especially from Uttarakhand for this particular event. Thank you so much.
Vikram. Vipul, please come forward. Thank you. Gagan, Mr. Goel. Mr. Sethi, you can also join us for the felicitation. Thank you. And Mr. Awasthi, again, thanks for this excellent session today. So much knowledgeable, and we are always blessed to have you with us. Thank you. And he's there till evening, so आप अच्छे से अब इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. Thank you so much again. You all can proceed for the expo now. Please visit all the stalls and do join us, all the industry people today at 5:30 and the other delegates tomorrow at 11 o'clock for the another sessions. Two very important sessions tomorrow. Thank you. जरूर जरूर मैं 27 को